Good evening, students. My name is Hemlata and I am your teacher. We were discussing class 12th biotechnology, and in that we have discussed about the gene predictions. So, gene predictions, we have also seen that how in gene predictions, the a surprising thing was that there was no correlation among the content of the DNA, content of the genome, and the genes, number of genes. So this was surprising because bacteria, E. coli, yeast, even other organisms were having the uh, chromosomes, large number of we can say content of the DNA, but still they are able to code for the proteins in the same way a human is having, whereas the human genome content is much higher. Still, the formation of protein was uh, not having any correlation. Then we have also discussed this about the genes and the diseases, that few genes make the human more susceptible to particular type of disease, like APOE gene was associated with Alzheimer disease, and the deletion of the chemokine receptor gene CCR5 leads to resistance to the HIV. This we have studied. Gene and disease, single gene mutations which follow gene polymorphism, which has complex Mendelian inheritance. Cystic fibrosis, transmembrane conductance regulator gene, and inheritance, autosomal recessive disease it is. The common late onset of Alzheimer's disease, inheritance, major cause of epsilon 4 allele of the gene, coding for apolipoprotein E. So ApoE is the apolipoprotein E. Then genomic location is chromosome 7, short arm 3, 31.2, 31.2. So this is the location of the cystic fibrosis gene. And on the other hand, genomic location of the ApoE gene is the 19q13. Now, recently on the chromosome 19 it is formed, and 19 short arm is the long arm is 19q is the long arm, and 13 is the location, and 10q21 is the location of the 10th chromosome number. So on two chromosome it is found. On chromosome 19q13 is the location, and on chromosome 10, the long arm of chromosome 10, 21. And here also the gene of chromosome number 7 it is found. It is the cystic fibrosis gene. Mutation, the most common mutation is deletion of 3 base pair, resulting in the loss of codon number 508, which codes for phenylalanine. So mutation is the most common mutation is deletion of 3 base pairs, resulting in the loss of codon 508. Huntington disease, inheritance is autosomal dominant, and the location is the long arm of chromosome 4. Okay, H is short arm, P is the short arm, and Q is the long arm. So chromosome number 4, short arm of chromosome number 4, 16.3. Mutation is increased number of CAG repeats more than 35 times. This is the mutation in the Huntington disease, HTT gene. And it's located in the chromosome number 4 and found on the short arm of 4 chromosome number 16.3 location. Migraine. Susceptibility locus is found on the chromosome 6, 12.2. It is also found in the short arm of chromosome number 6, 12.26, P 12, 21.1, and the chromosome 1 long arm 31. So these three genes are, two locations are present in the 6th chromosome.
short arm, and one location is present in the one chromosome long arm. Physicians can use patients' DNA. Physicians can use these DNA samples to determine the pattern of SNP genotype profiling, and from that they can precisely predict how patients are likely to respond to a particular drug. SNP analysis can also be used in population genetics, as some SNPs vary in different frequencies between population. The genome sequencing projects have revealed that the genomes of the organism, otherwise quite different in appearance, are quite similar. For example, mouse and man are quite similar. सो जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं, जिसमें हमें ये भी बता रहे हैं कि फिजिशियन यानी डॉक्टर्स किस तरह से पेशेंट के डीएनए सैंपल को डिटरमाइन करके एक बार उनके पैटर्न ऑफ एसएनपी और ढूंढ लेंगे, जीनोम प्रोफाइलिंग कर लेंगे, उनकी जीनोटाइप प्रोफाइलिंग, तो वो उनको अच्छे से पेशेंट्स को पर्टिकुलर ड्रग दे सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके ट्रीटमेंट को। और एसएनपी का एनालिसिस भी यूज हो सकता है population genetics में, as some SNPs vary in different frequencies between population. The genome sequencing projects have revealed that the genome of an organism, otherwise quite different in appearance, quite similar, for example, mouse and man are quite similar. कि जो organisms जैसे man और mouse है, वो organism बिल्कुल completely different हैं दोनों, but still उन दोनों के जो जीनोम है उनके अंदर क्वाइट सिमिलैरिटीज देखी गई हैं। अनदर एग्जांपल इसका है कि कंजर्व्ड एलिमेंट्स डिफरेंट स्पीशीज में, सच एज worm and the yeast, substantial portion belongs to genomic regions coding for protein. So बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो कि जीनोमिक रीजन्स में बिलोंग करता है, जीनोमिक रीजन्स का जो प्रोटीन को कोड कर रहा है। It is estimated that the difference between human and chimpanzee genome is only 1 to 3%. ये देखा जाता है कि जो ह्यूमन और चिंपैंजी का जीनोम है उसमें 1 से 3% जीनोम बस अलग होता है, वाइल ह्यूमन और माउस का तो 97.5% their working DNA सेम है. These similarities suggest that none of the genomes has changed much since we shared a common ancestor 100 million year ago. ये सब सिमिलैरिटी यही बताते हैं कि 100 मिलियन ईयर अगो पहले हमारा जो कॉमन एंसेस्टर था, उसके बाद से हमारे जीनोम को ज्यादा फर्क आया नहीं है, तो जीनोम चेंज नहीं हुए हैं. फंक्शनल जीनोमिक dissects the emerging knowledge about genomes to understand the gene and their product function and interaction. फंक्शनल जीनोमिक इमर्जिंग नॉलेज को यूज करती है जीनोम्स के, ताकि ये समझ सकें कि जीन और उसके जो प्रोटीन फंक्शन है और वो कैसे दो जीन के प्रोटीन फंक्शन जो है इंटरैक्ट करते हैं. एंड exciting new developments are now enabling scientists to get a wealth of clues to this complicated stories. So scientist exciting new developments हैं जो अब scientist को बहुत सारे अब उनके पास खजाना है, कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी का. न्यू टेक्निक, माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी एंड प्रोटियोमिक्स, ये दो जो टेक्निक है नई, माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी एंड प्रोटियोमिक्स, ये प्रोवाइड कराती है स्नैपशॉट ऑफ स्नैपशॉट प्रोवाइड कराती है ऑफ द ऑल द जीन एक्सप्रेस इन अ सेल और टिश्यू. जितने भी जीन्स सेल और टिश्यूज में एक्सप्रेस होते हैं उन सबका एक बाहर में डीएनए माइक्रो एरे एक स्नैपशॉट दे देता है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं. डीएनए माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी अब एनालाइज करा सकते हैं इससे एक्सप्रेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के किस तरह से बहुत सारे डीएनए मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होते हैं. फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, इट इज पॉसिबल टू introduce color into DNA by a technique called nick translation developed in 1977 by Rigby and Paul Berg. तो अब पॉसिबल है कि कलर को हम इंट्रोड्यूस कर सकें डीएनए के अंदर, टेक्निक जिससे कहते हैं निक ट्रांसलेशन मेथड, जो रिग्बी एंड पॉल बर्ग ने
फ्लोरेसेंस इंसिटू हाइब्रिडाइजेशन के दौरान निक ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू एक टेक्निक बताया जिससे हम डीएनए के अंदर अलग अलग तरह के फ्लोरेसेंस कलर यूज कर सकते हैं, उनको उसको कलर से लेबल्ड कर सकते हैं। Enzyme DNA polymerase 1 make DNA and DNA is one which cuts DNA are combined in a blurred reaction with DNTP including DUTP labeled with a green or red fluorescence. So enzyme जो DNA polymerase 1 होती है ये DNA को बनाती है, DNA is 1 जो होती है वो DNA को कट करती है। DNA कंबाइन होते हैं बफर्ड रिएक्शन में विद DNTP इंक्लूडिंग DUTPs, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट लेबल्ड विद रेड और ग्रीन फ्लोरेसेंस, जिसमें DUTPs रेड और ग्रीन फ्लोरेसेंस डाई से लेबल्ड रहते हैं। द DNA polymerase 1 adds nucleotide residues to the 3' hydroxyl terminal. DNA polymerase 1 न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज को 3' हाइड्रोक्सिल टर्मिनल्स पे ऐड करता है। दैट इज रिजल्ट ऑफ निक ब्रेक क्रिएटेड बाय DNase 1, जो DNase 1 से जो ब्रेक क्रिएट किया था, और उसके बाद जब DNA पॉलीमरेज 1 को ऐड करते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड्स डालेगी, ऐड करेगी 3' हाइड्रोक्सिल टर्मिनल पे, और अब जो न्यूक्लियोटाइड वो डालेगी तो उसको हम फ्लोरोसेंटली लेबल कर देंगे। इन द प्रोसेस द फ्लोरोसेंट लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड इन द फ्री न्यूक्लियोटाइड मिक्सचर बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड, और इस वजह से निक का ट्रांसलेशन हो जाएगा, निक बढ़ जाएगा। निक मतलब गैप। तो अनलेबल्ड डीएनए दिख रहा है हमें, एंजाइम डीएनए इज 1 डाल दी इसमें, डीएनए निक्ड इन रैंडम लोकेशंस पे डीएनए कट हो गया, एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 डाल दी प्लस 4 न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए, वन ऑफ देम इज लेबल्ड बाय द फ्लोरेसेंस। अब फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 ने 5' 3' डायरेक्शन में बढ़ा दिया डीएनए को, और नए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के पास लेबल्ड डीएनए हो गए कलर से। And nick translation, nick breaks and created the DNA using DNase 1. Subsequently, DNA polymerase 1 synthesized new DNA and older को template लेकर incorporate the labeled nucleotide in the process. और यहाँ पे हम DNA को लेबल कर सकते हैं इस मेथड से। DNA fragment size with fluorescent probe after nick translation depend upon the amount of the enzyme and the incubation time of the reaction. तो डीएनए फ्रेगमेंट का साइज जो है वो फ्लोरेसेंट प्रोब के ऊपर डिपेंड करता है आफ्टर निक ट्रांसलेशन, जो डिपेंड करता है कितनी एंजाइम प्रेजेंट है और इंक्यूबेशन टाइम क्या है। तो उससे हमने ज्यादा एंजाइम डाल दी और अगर थोड़ा टाइम ज्यादा रख दिया रिएक्शन के लिए तो साइज रेंज में 300 से 3000 बेस पेयर्स तक का भी हम बना सकते हैं इसको। द एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेसेंस इंसिटू हाइब्रिडाइजेशन FISH, ये एप्लीकेशन है FISH का, को हम देख सकते हैं इसको क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकोमिया CML को एग्जांपल लेके हम इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द कैरियोटाइप एनालिसिस ऑफ लिम्फोसाइट प्रिपरेशंस मेड फ्रॉम ब्लड सैंपल्स ऑफ CML पेशेंट्स। सो ये ऑब्जर्व किया गया कैरियोटाइप एनालिसिस के दौरान लिम्फोसाइट प्रिपरेशन से जो कैरियोटाइप बनाया था ब्लड सैंपल से, जिनको CML जो पेशेंट्स थे क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया के पेशेंट्स जो थे, that there was 9 to 2 ट्रांसलोकेशंस इन द क्रोमोसोम्स के यहाँ पर ये देखा गया कि देयर वर 9 to 22 ट्रांसलोकेशन इन द क्रोमोसोम, ऑल्सो कॉज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं कि जो CML के पेशेंट थे उनमें 9 क्रोमोसोम से क्रोमोसोम नंबर 22 पे ट्रांसलोकेशन हुआ था। And although by count the number of such cells, it was possible to find out the severity of the disease. It was not an easy procedure. ऐसे सेल्स को काउंट करके पता करना कि कितना सीवियर है डिजीज का, वो इजी प्रोसीजर नहीं था। The region of the on the chromosomes involved in the translocation were identified chromosome number 9 and 22. द रीजन जो इन्वॉल्व थे ट्रांसलोकेशन में वो आइडेंटिफाई हुए थे क्रोमोसोम 9 पर और 22 पर। फ्रॉम द DNA लाइब्रेरी इट वाज पॉसिबल टू पिक अप क्लोन्स कैरिंग द पर्टिकुलर जीन्स इन्वॉल्व्ड इन द CML। तो cDNA लाइब्रेरी
और डीएनए लाइब्रेरी से हम वो वाले क्लोन्स को पर्टिकुलरली पिक कर सकते थे जिनके अंदर ऐसी जीन्स जो इन्वॉल्व थी सीएमएल में. यूजिंग निक ट्रांसलेशन इट वाज पॉसिबल टू फ्लोरेसेंटली लेबल क्रोमोसोम 9 रीजन with red color and chromosome 22 with green color and prepare the probe. और निक ट्रांसलेशन मेथड से हमने क्रोमोसोम नंबर 9 का रीजन उनको रेड कलर में कलर किया, फ्लोरेसेंटली लेबल किया है, क्रोमोसोम 22 को ग्रीन कलर में लेबल करके प्रोब प्रिपेयर कर लिया. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेयर आर द क्रोमोसोम्स BCR red and green. Chromosome 9 was labeled red and 22 portion was labeled with green. Reciprocal translocation between chromosome 9 and chromosome 22 forms an extra long chromosome number 9DR9 and Philadelphia chromosome PH1 containing 22 fused BCR gene. BCR gene fuse हो चुकी है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं. It was observed that when CML lymphocytes was seen, CML lymphocytes cells, smear cells were hybridized with the two probes in situ, and when observed under fluorescent microscope, the cells which were affected appear yellow. Mixing of green and red color produces yellow color, and unaffected cells appear as red and green. Technique is known as fluorescent in situ hybridization, allowing knowing the status in the interphase, unlike in karyotyping where you need a metaphase chromosome. तो अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन हो जाता था फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन से एट इंटरफेज स्टेज. मेटाफेज स्टेज जरूरी नहीं होती थी. द स्टेटस ऑफ द डिजीज कुड बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ cells which appeared yellow, and it was possible to monitor the effect of chemotherapy and the drug by taking out the samples and counting the number of cells appearing yellow. तो कीमोथेरेपी का भी इफेक्ट मॉनिटर कर सकते हैं इससे, बार बे नंबर काउंट करके जो सेल जो क्रोमोसोम येलो अपीयर हो रहे हैं उनसे देखकर. माइक्रो एरे टेक्निक समझाई हुई है फिर बाद में, एंड इंटरप्रिटेशन बताया हुआ है माइक्रो एरे का, एंड प्रोटियोमिक्स इज ऑल्सो शोन हियर. About proteomics, examples is given. Structural proteomics. Various types of proteomics is explained. Structural proteomics and functional proteomics. Just like genomics, structural and functional, proteomics is also structural and functional. And expression proteomics. So we will be dealing with this structural, functional and expression proteomics in the next video. Then when we will be doing proteomics, and we will be studying about the microarray also, how to interpret a microarray, what is a DNA microarray technique. ये हम अलग से वीडियो में करेंगे. एंड आज हमने समझा किस तरह से फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन फिश टेक्निक यूज होती है CML पेशेंट्स को पता करने के लिए. एंड और फंक्शनल जीनोमिक्स में हमने देखा कि माइक्रोएरे टेक्निक्स यूज होती हैं. फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन रिग्बी एंड पॉलबर्ग ने डिवाइस करी, और निक ट्रांसलेशन मेथड से हम कैसे किसी भी टेम्पलेट डीएनए में उसको डीएनए पॉलीमरेज 1 से उसे सिंथेसाइज करा के अब और रेडियो लेबल्ड या फिर फ्लोरेसेंटली लेबल्ड कर सकते हैं निक ट्रांसलेशन मेथड से. So with this, I would like to end the video here. I hope you have understood the things.